Hello dear aspirants, welcome to Bipin sir official YouTube channel. आमे SSB TGT एग्जाम पई MCQ सीरीज स्टार्ट कर नैछे गतकाली आमे स्टार्ट करथिले हिस्ट्री रो गोटे सीरीज स्टार्ट कर जोथरे में 30 टी क्वेश्चन डिस्कशन करथिले आज आमे पॉलिटी रो किछ क्वेश्चन डिस्कशन करबा जोटे कि आपनकर सीरीज 1 रहबो सीरीज 2 सीरीज 3 एमते एक टोटल जेमति कि थंबनेल आपनकर मेंशन से देखि पड़थिबे कंप्लीट आपनकर पॉलिटी MCQ कंप्लीटली आमे जहां भी सिलेबस रहिछि टोटल पॉलिटी को आमे MCQ जरिया एंड करबा बा समाप्त करबा सो समस्या को समस्या बाटर जीवा दियो किंतु एहा भितरे मन देई पाठ पढ़ कहर अर्थ होछि आपण माने देखुथिए वर्तमान जो संग्राम जारी रहिछि एलटीआर पई आपण माने देखुथिबे एवं एसएसबी टीजीटी किभଳି भाबरे आसीबो समस्तंकर लढई जारी रहिछि ए संग्राम भितरे आपण माने केबे भूली जानतु नाही कि आपण माने जणे जणे स्टूडेंट्स एवं आपण को प्रस्तुत हेबाक पड़िबो आसंता बा अपकमिंग एग्जाम पई तो सेति पई समय बाहर करी कि आपनर पाठ को कंटिन्यू रखंतु निजर प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखंतु तार भितरे जहां भी संग्राम जारी रहउछि सेतर लढई रे आपण मध्ये शामिल होंतु धन्यवाद तेबे स्टार्ट करिया विलंब करबानी आज रो टॉपिक हमर रहिछि पॉलिटी रे किछि हम एमसीक्यू डिस्कशन करबा जहा कि आपण को हेल्पफुल होबो एसएसबी टीजीटी अपकमिंग एसएसबी टीजीटी पई एवं ता सहित जेटी पई मध्ये आपण को हेल्पफुल होबो तले प्रस्तुत हो जाओ क्वेश्चन आंसर देबा पई फर्स्ट क्वेश्चन आपण सामने रहिला Which one among the following is not a fundamental right under the Constitution of India? Question भल भाबरे माइंडफुली सुनो बुझिया पई चेष्टा करो देन क्वेश्चन ऑप्शन गुडी को कोन अछि भल भाबरे पढो तापर आंसर दे तरबर किछि होबार नै कने एबे जेमिति आपण प्रिपरेशन होउछंती जेमिति आपण आंसर दउछंती सेही स्ट्रेंथ रा आपनकर अप टू एग्जाम पर्यंत रहिबो एबे देखंतु जो स्ट्रेंथ आपनकर रहबो जदी हेले गेले कि आपनकर आंसर देबे सेही हेले गेले पॉइंट ही आपनकर रिफ्लेक्ट करियो आपनकर रिजल्ट रे बा आपनकर एग्जाम रे तो सेति पई जदी एबे किछि कमी रहि जाउची तो ताकू टिके लेवल टिके बढ़ाओ लेवलटा बढ़े पूरा हाई लेवल जेमति पहुंचार अछि बिफोर एग्जाम तापर एग्जाम रे आपनकर जेमति भला भाबरे सब क्वेश्चन सटीक आंसर आपन दे परिबे तो ताहले ऑप्शन पढो ऑप्शन देछि आपनकर राइट टू इक्वालिटी आपनकर इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू सिटीजनशिप्स राइट टू एग्नेस्ट एक्सप्लोरेशन कोन राइट आंसर सटीक आंसर जदी देखिबा नॉट ए फंडामेंटल राइट्स देछि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तामने एटा में देखिबा ऑप्शन सी हबो राइट टू सिटीजनशिप आपनकर फंडामेंटल राइट्स रे नाही सो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर ओके तापर जो क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 अंडर रे केमटे आपनकर आसु नाही से पचारुछि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटा आसीबो देखो आर्टिकल 9 रे आपनकर 6 टी आपनकर आसुछि तो से 6 टा कोन आपनकर थ्योरी क्लास रहिछि आपन माने देखि नेबे कहि दिछि आपनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपनकर कहिबार अधिकार रहिछि कहि परिबे राइट टू असेंबली पीसफुल एंड विथ आर्म्स एटा हबनी पीसफुली विथ आर्म्स हबो नाही तापर राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी हां आपनकर अधिकार अछि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया जे कोन से स्थान को आपन परिभ्रमण करि परिबे हां एटा भी अधिकार अछि किंतु बी टा नाही जेते पछल विथ आर्म्स देछि ओके बुझबला तो चलो पीसफुली एंड विथ आर्म्स आपन बाहुबल सहाय्य रे मध्ये आपनकर जोठी मन सेठी असेंबली करि परिबे सेमते अछि कि नाही एमति होबा नाही ऑप्शन बी होबो करेक्ट आंसर जेतु नॉट से पचारिछि क्वेश्चन नंबर 3 जिबा which of the following provides for complete equality of men and women in India भल भाबरे पढो which of the following provides for complete equality of men and women in India article 14 and 15 एटा आपनकर रहिछि both of men and women पई समान इक्वालिटी रहिछि कि आर्टिकल 14 and 15 रे ना आपनकर 5 ना शेड्यूल 5th ऑफ शेड्यूल ना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ना आर्टिकल 25 ना ये सब किछि होबनी आर्टिकल जदी हमें कहिबा आर्टिकल 14 एंड 15 ए दुईटा का आपनकर रहिछि बोथ मेन एंड वुमेन पे इक्वालिटी रहिछि सो ऑप्शन ए होबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 डैश प्रोवाइड्स discrimination on the grounds of religion race caste sex or place of birth or of any of them कोन हम सटीक आंसर आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 provides a discrimination माने आपनकर आसीबो discrimination on the ground of religion race caste एटा आर्टिकल आपनकर 15 हबो सो आर्टिकल 15 हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर देन जो क्वेश्चन नंबर 5 रे कोन पचरला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया choose the correct statement with respect to freedom of speech and expression in India it is enshrined in part 3 of the constitution it is not an absolute right to express one's thoughts freely it can be
suspensed in the emergency. Yes, all of these habo. So right answer is option D habo correct answer. Question number 6. Which one of the following was added as fundamental duty through the Constitution 86th Amendment Act 2002? कौन हम सटीक आंसर भल भाव पढ़ आंसर दियो. To strive towards excellence in individual and collective activity, to educate one's child between the age of 6 to 14. हाँ 86 पचला ना से ठीक अछि ऑप्शन बी पाइगल करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 जीवा 7 कोन पचाउछि देखो. Consider the following statement. Warrant is a very powerful instrument for safeguarding against the usurpation of public offices. Then a high court can issue a mandamus to compel a court or judicial tribunal to exercise its jurisdiction when it has refused to exercise it. Which of the statement given above is correct? दीटा भितर को स्टेटमेंट करेक्ट दे पचार देख जदि हम देखिबा एटा ऑप्शन डी हबो मो मतरे काहे नाइदर वन नाइदर टू हबो. आपनकर एई जो पार्ट आपनकर रहिछि रीड्स आपनकर रहिछि मांडामस हे गला कोहेरेंट हे गला ए रीड्स पेज आपनको मु नोट प्रोवाइड करथिले आपन मानको जो माने नोट तो रखिछन देखि नियंतु एवं क्लास रे मधे मो जिनसडा आपन फंडामेंटल राइट्स एतले पढाइतिला आपन देखिबे एटा मधे पढाइछि ठीक अछि आपन टी चेक करनेबे. Question number 8. Fundamental rights guaranteed under which one of the following articles of the Constitution of India is available only to the citizens of India? कौन हम सटीक आंसर आर्टिकल 19 हबो ना आर्टिकल 20 ना आर्टिकल 21 ना आर्टिकल 22. Fundamental rights guaranteed under which one of the following articles of the Constitution of India is available only the citizens of India? एटा आपनकर आर्टिकल 19 हबो आर्टिकल 19 हबो राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर. Then जिबा क्वेश्चन नंबर 9. Which among the following reads is issued to quash the order of a court or a tribunal? कोन से ठीक आंसर मांडामस हबो नाही प्रोहिबिशन नाही क्यूरेंट हबो नी एटा हबो आपनकर सर्शियरी हबो आपनकर सर्शियरी हबो आपनकर सर्शियरी ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर. Which among the following reads is issued to quash the order of a court? एटा आपनकर हबो ऑप्शन डी सर्शियरी. बुझे जी सब थ्योरी क्लास रे आपन माने जेटा बुझि नेबे हला सब अछि थ्योरी रे. तापर जे क्वेश्चन नंबर 10. Text or reasonableness is a very important consequence under the following articles. Article 13, Article 14, Article 15, Article 16. Text of reasonableness is a very important consequence under the following articles. एटा आपनकर आर्टिकल 14 है ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी मन रखो गुडा सब स्टेटमेंट गुडा को मन रखो टर्म गुडा को मन रखो टर्म सहित तार को आर्टिकल सहित लिंक रहिछि को आर्टिकल अंडर रे आसुछि आपन टी भला बुझे मु कहितली प्रीवियस क्लास रे एसएसबी टीजीटी रो जो क्वेश्चन आपनकर आसे तार लेवल ता आपनकर जो देखिबे ये सब आपनकर थ्योरी बेस आपनकर क्वेश्चन रहइबो जो मानेकर थ्योरी जते बा कांसेप्ट जते क्लियर थिबो से माने एसएसबी टीजीटी रो क्वेश्चन के सते भलो भाव अटेंड कर परिबे. जो मानेकर क्लियर ए पर्यंत नाही कांसेप्ट से माने को ए क्वेश्चन अटेंड करे डिफिकल्ट हबो बुझि पाले. तो सेति पई कहूची जो मानेकर ए पर्यंत क्लियर होई नाहंती कांसेप्ट बा थ्योरी क्लास आपण माने जे कोनसी सोर्स रु स्पेशली मु रेकमेंडेड करबी या आपनकर ओडिया बुक जो रहिछि 6th क्लास रो आरंभ करी प्लस 2 लेवल पर्यंत सब ओडिया बही को प्रथम पढि नियो. देन यूट्यूब रे जे कोनसी आपनकर फैकल्टी जो फैकल्टी कर पाठ पढा आपनको भलो लागुछि सेमानकर जदि किछि थ्योरी क्लास अछि आपण माने सेटु जाकी मते क्लास करी क्लियर हो जाओ. एवं आमर बिपिन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रे मध्ये आपनकर एसएसबी टीजीटी पई थ्योरी क्लास रो प्लेलिस्ट बनाई के अछि आपण माने चाहिले सेई क्लास को मध्ये देखि पारिबे एवं निजर कांसेप्ट क्लियर करि पारिबे बुझियला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 11 नंबर क्वेश्चन. राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए टैक्स. कोन बस ठीक आंसर राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया. फंडामेंटल राइट्स आपनकर एटा हबो फंडामेंटल राइट्स आपनकर एटा अछि कि नहीं नेचुरल राइट्स हबो नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हबो एटा अछि लीगल राइट आपनकर हबो ऑप्शन डी सॉरी एटा हबो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हबो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ठीक अछि. क्वेश्चन नंबर 12 जिबा
The protection against arrest and detention under Article 22 of the Constitution of India is available to kaha pai isu available अछि protection against arrest and detention under आपन जो 22 under article under आछि kaha pai eta आपन जुडिशियल से पचारछि ऑप्शन ए देला आपन कोन दिछि an enemy alien pai ना आपन a person detained under a preventive detention law ना ऑप्शन 3 देछि ए फॉरेनर पई ऑप्शन डी देछि एन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया पई चारटा ऑप्शन देला पछिला चूज द करेक्ट आंसर कोन हबो एयर देला 1 एंड 2 1 एवं 2 हबो की ना बी देला 1 3 4 1 3 4 हबो ना 1 2 3 हबो ना अपन 3 एंड 4 ओनली हबो 3 एंड 4 3 देछि आपन ए फॉरेनर 4 देछि एन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ताल सटीक आंसर जो देखिबा ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर 3 एंड 4 ओनली 3 एंड 4 ओनली ए फॉरेनर and overseas citizens of India. चलो question number 13 which part of the constitution is described as the Magna Carta of India केउ पार्ट आपन करो describe करछि as the Magna Carta of India Magna Carta माने कोन कहितली important document को फॉर आपन देखिबे ब्रिटिश इंडिया रो important document को Magna Carta कहै जाउथला तो सेटा को पार्ट आपनकर डिस्क्राइब अछि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जदि देखिबा ताले एटा सटीक आंसर अछि पार्ट 3 ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कम्स अंडर डैश कहा केउ आर्टिकल अंडर रे आपनकर आछि राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आछि आपनकर कहले आर्टिकल 23 रो 24 अंडर आसीबो सो ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर तापर जो क्वेश्चन नंबर 15 The UN and its agencies enjoy the dash diplomatic immunity na civil immunity criminal immunity na आपनकर justice immunity हबो द यार सटीक आंसर मन रखो एटा ऑप्शन ए हबो diplomatic immunity हबो देन जीवा क्वेश्चन 16 permanent laws are issued by the dash permanent laws कहा द्वारा इश्यू होइतै प्रेसिडेंट के द्वारा ना पार्लियामेंट द्वारा ना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ना सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखो परमानेंट लॉ ता आपनकर पार्लियामेंट रे ही होइतै So option B होगा correct answer parliament then जो question number 17 according to the supreme court even a private body or an agency working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under article केउ अंडर रासिबा आपनकर सेटा 11 ना 13 ना 40 आपन 12 ना 15 क्वेश्चन बोले पढिरो आंसर दियो जदि न दे परछ सटीक आंसर कोन हबो 12 हबो मन रखो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर 12 Then your question number 18 with a reference to fundamental rights consider the following statement fundamental rights विषय से कहूची कोन some of them are available to citizens only to dela all of them are available against the arbitrary laws of the legislature some of them are available against the action of private individuals all of them are अपन sacrosanct in nature कोन अब राइट आंसर How many of the above statements are correct? केउ स्टेटमेंट केतोटी स्टेटमेंट थ्रू करेक्ट अछि पचारछि only one only two only three only none of these कोन सटीक आंसर ऑप्शन सी कोन देखि only 3 तीनटा आपनकर ठीक अछि एठी आपन पयटा होम टास्क रहिला होमवर्क रहिला आपनकर ए जो 1 2 3 4 चारिटा स्टेटमेंट देछि सेथरो तीनोटी स्टेटमेंट करेक्ट अछि केउ तीनोटी स्टेटमेंट करेक्ट अछि केउटी भूल अछि मते आपनकर कमेंट बॉक्स रे दियंतु जो माने एक्चुअली क्लास देखुछो जोरे प्रिपरेशन होइछन आगुरु देखिबा एक्चुअली देई परछन नै सेमति किछि टास्क न गोटे रॉकेट साइंस दियाला टास्क प्रैक्टिस करंतु को स्टेटमेंट आपनकर भूल अछि आ तीनटा स्टेटमेंट ठीक अछि मते क्वेश्चन नंबर 18 लिखि के आंसर दबो तब जे क्वेश्चन नंबर 19 which part of the constitution is called the co-sciences of Indian constitution co-sciences of Indian constitution को पार्ट को आपनकर कहछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ना फंडामेंटल राइट ड्यूटी ना फंडामेंटल राइट्स को मोर देन वन ऑफ द एबव कोन सटीक आंसर एटा ऑप्शन आपनकर सी फंडामेंटल राइट्स को आपन कहै छी को साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मन रखो देन जिबा क्वेश्चन नंबर 20 odd one out wrongly matched देखो wrongly matched जोटा थिबो ताको बाहर करबो आर्टिकल 25 it guarantees the freedom of a profession practice and propagation of religion to all citizens एटा तो ठीक अछि ई मैच ता ठीक अछि आर्टिकल 26 कहला it guarantees the freedom to आपनकर सॉरी हां मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इटा भी ठीक अछि
आर्टिकल 27 कहला इट guarantees freedom as the payment of taxes for the promotion of any religion एटा भी ठीक अछि ताले भूल कोठा हला none of the above हबो सटीक आंसर पे गेले ऑप्शन डी किछि भूल नै सब करेक्ट मैच अछि क्वेश्चन नंबर 21 freedom to live with human dignity is enshrined in which article dignity पचारले human dignity पचारछि एटा आपनकर 21 हबो कोन हबो सटीक आंसर 21 ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर तापर 22 आर्टिकल डैश इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल एटा मध्ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याक मन रखो आर्टिकल केउ आर्टिकल की हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले कुआ जे 19 14 32 एंड 21 एटा मन रखो क्वेश्चन 32 कोन हबो सटीक आंसर 32 देन जीवा 23 देखो which one of the following is a non justiciable right non justiciable right कोटा भितरु right to adequate child livelihood हां एटा हबो right to against exploit ना एटा बनी right to accused नहीं right to equality नहीं ऑप्शन ए यस ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए non justiciable right पछे तापर जे क्वेश्चन नंबर 24 dash of the Indian constitution provides human trafficking and beggar forced labor with without payment prohibits option जदि देखिबा 23 हबो कि देखि हां यस 23 हबो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर तापर जे 25 कोन कहूची देखो the right to property article 31 was deleted from the list of fundamental rights by the केउ अमेंडमेंट जरिया रे आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी बा आर्टिकल 31 को आपनकर डिलीट करा गला 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ना 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 ना 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980 एटा किछि हबनी ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी को आपनकर डिलीट करा गला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 which fundamental rights cannot be suspended even during the emergency केउ फंडामेंटल राइट्स आपनकर इमरजेंसी लागले भी ताकू सस्पेंस रखा जाय परिबो नाही बा cannot be suspend हवा नाही right to speech right to religion right to equality right to life of personal liberty yes option d ता को आपन सस्पेंड करि परिबे ना बाकी सब तो सस्पेंड हे परिबो केउ टाइम रे ड्यूरिंग इमरजेंसी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा Next question 27. Right to freedom of speech and expression is mentioned under which article? Right to freedom of speech and expression is mentioned under which article? 18 ना आपनकर article 19 article 20 ना 21 कोन सटीक आंसर जदि हम देखिबा सटीक आंसर ऑप्शन 19 right to speech and expression option B होबा correct answer 19 then जे question number 28 right to constitutional remedies is provided under which article constitutional remedy 32 में पड़ी गसले soul and heart जोटा में जा कहू छी जो आर्टिकल की सेटा होची आपनकर constitutional remedy सो ऑप्शन 32 बा आपनकर ऑप्शन बी आर्टिकल 32 इज द करेक्ट आंसर तापर छिबा क्वेश्चन नंबर 29 which article ensure the right of education as a fundamental right एटा 21 ए हबो 21 ए ऑप्शन ए पाई गला सटीक आंसर 21 ए मन रखो 22 नो कि 24 ए नो कि 25 ए नो कंफ्यूजन करे को लिखि देखो 21 ए एटा हबो 21 ए देन आज रो सेशन लास्ट क्वेश्चन करिवा हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशनड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी फंडामेंटल राइट्स मेंशन अछि 5टी 6टी 7टी 8टी 7टी थिला गोटे कटि गला कटि आपन केतोटी अछि 6टी सो ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर ओके सो आज सेशन जदि आपन क्वेश्चन गुडी को भलो लागि छि निश्चित भाबरे लाइक करिवे समस्त टिक लाइक करिवे जमार भूलिबेनी एवं नुवा नुवा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कॉन्सेप्चुअल आपनकर थ्योरी बेस हो किबा आपनकर एमसीक्यू क्वेश्चन गुडी को प्रैक्टिस करिया पई थ्योरी कांसेप्ट थ्योरी क्लास देखिया पई विपिन सर ऑफिशियल YouTube चैनल विजिट करंतु एवं नुवा तले सब्सक्राइब करंतु संग साथी मानकु शेयर करंतु धन्यवाद।